Good evening students, welcome to Commerce Canpit Odisha. Today we'll start with cost curves. Hello? Cost curves meaning hochi diagrammatic representation of the different costs incurred during the tenure of production process. Hello? Production process carry out hela alugu जहाँ किछि भी कॉस्ट इनकर हबो सबु जगह जेतल हमें गुटे चार्ट किबा गुटे कर्व हिसाब रे डायग्राम हिसाब रे जेतल हमें रिप्रेजेंट करबा ऑल दिस थिंग्स विल कंसीडर अ कॉस्ट कर्व हैला कॉस्ट कर्व रो गुटे मेन जिंस आछि हमर कोन स्केल ऑफ प्लांट सो व्हाट डू यू मीन बाय स्केल ऑफ प्लांट रो मीनिंग होछि क्वांटम ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी क्वांटम ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी बुझि पाले माने क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी से प्रोडक्शन एक्टिविटी भितरे केते क्वांटिटी हमें कैरी आउट करिया माने 1000 kgs प्रोड्यूस करिया ना 1 kg प्रोड्यूस करिया ना 1 टन प्रोड्यूस करिया से सब होचे कोन हमर क्वांटम ऑफ प्रोडक्शन तो क्वांटम ऑफ प्रोडक्शन को धरि के प्लांट ता फिक्स करबा प्लांट इन द सेंस व्हाट मशीनरी रा हम फिक्स करिया बुझि पालो तो से कोचे कोन इन शॉर्ट पीरियड अ फर्म हैज फिक्स्ड स्केल ऑफ प्लांट one short run average cost curve is corresponding to a particular scale of plant माने जदि हम शॉर्ट रन पीरियड कंसीडरिंग 6 मंथ्स करूछु हैला 6 मंथ्स जेतोला हम आगरो प्लान करछु त हम कोन बेटर प्लान करि परबा क्वांटिटी फॉर एग्जांपल द क्वांटिटी इज 50 kgs हैला मशीनरी जहां भी अछि सेटा टाइप ए सम मशीनरी जोडा कि टाइप ए क्लासिफाई हिच सेटा हम ए क्वांटिटी पे यूज करबा देन कोन आछि हमरो लेबरर्स केते घंटा काम करिवे ना 10 आवर्स काम करिवे सो ऑल दिस इज प्रीफिक्स्ड आगुडा हम फिक्स करि परिया काहे कि जेतोडा शॉर्ट पीरियड त हम फिक्स जिंसो करि परिबा देन से कोन गोची इन शॉर्ट पीरियड द फर्म कैन ऑपरेट ऑन अ पर्टिकुलर स्केल ऑफ प्लांट तो स्केल ऑफ प्लांट जेतोडा हम जाना पड़ जे माने क्वांटिटी रे जाना पड़ जेबो त हम स्केल ऑफ प्लांट ता भी डिसाइड करि के रखि दे परिया बट इन लॉन्ग रन अ फर्म कैन चूज अमंग possible sizes of plant or it can move from one scale of plant to another scale of plant हैला तो से कहूची कोन cost curves are dependent upon scale of plants scale of plant इस scale of plant रे से कोन कहूची long run रे कोन हबो and short run रे कोन हबो लॉन्ग रन रे कोन हबो एंड शॉर्ट रन रे कोन हबो हैला फिक्स्ड स्केल ऑफ प्लांट बट एडी कोन होची different possible sizes of plant are available हैला जोडा लगी से चूज करि परिबो a firm can easily choose among them एथिरे कोन गुटे फिक्स्ड स्केल ऑफ प्लांट जेतु हे जैथिबो हैला मूवमेंट इज नॉट पॉसिबल माने गुटे प्लांट रो आउट प्लांट को शिफ्ट हे पारिबोनी बट एरा रे कोन हो शॉर्ट रन रे इट कैन इजीली मूव फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर माने आउट स्केल को भी से मूव करि पारिबो माने मशीनरी भी चेंज करि पारिबो ताकू इच्छा हले क्वांटिटी भी चेंज करि पारिबो केतळको शॉर्ट रन रे से कहूछ हैला बट लॉन्ग रन रे से कहूछ फिक्स्ड स्केल ऑफ प्लांट आई थिंक भूल लेके देले मु सॉरी हेडिंग बोल दे देनी एडी आसी हमरा शॉर्ट रन एडी लॉन्ग रन हैला एती आगा आउ गोटे पॉइंट लिखि दियो एडी तळे कि शॉर्ट रन रे कोन होची लॉन्ग रन रे कोन होची से गुटे से मेंशन करछि देखो इन लॉन्ग रन अ फर्म कैन मूव फ्रॉम वन स्केल ऑफ प्लांट टू अनदर लॉन्ग रन रे shifting from one scale of plant to another is possible बुझी पालो शिफ्टिंग ला पॉसिबल होची लॉन्ग रन नो सच शिफ्ट is generally seen no such shift is generally seen clear
जनरली ये शिफ्ट हमको देखिया को मिलेबनी ओके तापर देखो से कौन कहूची in the above diagram there are various short run average cost curves which corresponding to various sizes of land. The long run average cost curve will be tangent to each of the short run average cost curves. It shows the least possible average cost producing a quantity of output when the scale is varied. एटा होचे हमर important point हैला से कहूची कोन question लेखो fast question डा हेडा the point when the least possible average cost producing a quantity of output when the scale of production is generally different हैला केमिति हबो ना से गुटे रूल कहिछि देखो एडी the long run average cost curve will be tangent to each of the short run average cost curve. The long run average cost curve will be tangent to what? To each short run what? Average cost curve. Short run average cost curves. माने से कोची कोन लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व जहाँ भी अच्छी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पे से कॉस्ट कर्व गुडा होथिबो जेते लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पे होथिबो ता भितरे केते गुडा माने शॉर्ट पीरियड रो कर्व भी इंक्लूड हे परियो माने जदी मनर एडा जो कर्व ता अच्छी एडा मोर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व हैला डिटरमाइन करबे ए लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व जदी मु एडा 3 इयर्स पे लेखुची 3 इयर्स पे डिटरमाइन करली 3 इयर्स भितरे 1 इयर भितरे हमर केतरा 6 मंथ्स रोची 2 6 मंथ्स रोची हैला दीडा 6 मंथ्स रोच माने सेमी पीरियड सेमी एनम मु कहि परिबी तो 3 इयर्स भितरे एमती केतरा पीरियड रहयो ऑब्वियसली 6 सेमी एनुअल पीरियड्स मु लेखुछ एग्जांपल दोछ नथिंग कॉम्प्लिकेटेड हियर बुझो 6 पीरियड्स माने 6 शॉर्ट रन पीरियड्स को मु डिवाइड करछ गुटे शॉर्ट रन पीरियड इज इक्वल टू 6 मंथ्स हैला तो 3 इयर्स भितरे केतरा 6 मंथ्स आसियो 6 ऑब्वियसली तो 6 शॉर्ट रन कर्व्स हे परियो ना नहीं ऑब्वियसली हबो हैला तो मु गुटे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व भी कहि परि किबा 6 कोन सानो सानो एवरेज कॉस्ट कर्व भी कहि परि शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व भी कहबी तो से जिंसो एति कि सब जिंसो तुम बुझिया दरकार नहीं मु खाली क्लियर हेबा पई माने विजुअल रिप्रेजेंटेशन पई लिखिली बाकी कोन तुम खाली गुटे जिंसो मन रखियो कोन लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व जहां भी अछि सेटा सबले टेंजेंट रहइबो टू एवरी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व माने एग्जांपल जेंति देछि एडा देखो एडी कोन हेछि गुटे बड़ कर्व अछि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व जोडा कि 3 इयर्स पई एग्जांपल रे देखले आ एजा सब कोन 6 मंथ्स हैला क्लियर मो एग्जांपल कोच माने मो एग्जांपल रे मु कोच टोटली क्लियर अछि टेंजेंट माने किछि नै सेडा एम्ति हमें टेंजेंसी ऑफ ट्रायंगल्स ये देखुथिलु तो टेंजेंट माने होछि तार टिप टा को हिंदी लगबो क्लियर सो एति कि तुम बिट क्वेश्चन कोन आसबो मो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रे कहि देली एक्सप्लेनेशन देली एबे देखो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज यू शेप्ड इट्स आल्सो कॉल्ड एज प्लानिंग कर्व और एनवेलप कर्व like the LAC curve the long run marginal cost curve is also U shaped the TC curve starts from the origin where the TFC curve is started हैला तो एडी लेखो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व लॉन्ग रन एवरेज cost curve or long run what marginal cost curve long run marginal cost curve so this is representing the average cost in
long period of time, long period of time. और एटा कौन marginal cost, marginal cost ର meaning कौन थिला cost of producing one additional unit हैला marginal cost in long period of time. ए दिरा जरा meaning लिखेली. एबे देखो both of them are U shape. लिखो एडी both these curves are U shaped. Both these curves are U shaped. And long run average cost curve is also known as what? गुटे होची हमरो planning curve or envelope curve. Planning curve or envelope curve. Clear? Planning curve or envelope curve. एटा गोटे important question हे परियो तम पे. Planning curve is also known as से पछाया because long run average cost curve is also known as planning and envelope curve. तमे मन रखि पारिबो. Still से कौन पछारे planning curve is better known as long run average cost curve. It is LAC. LIC नहीं LAC. Clear? एबे देखो again से same जिंस कहिची very simple things are told here. Average cost meaning कौन average total cost per unit of output. एडा में पिलाडो पढ़ी के आसछु average किंदी find out करछु total by n t by n करछु. तो एडी कौन होची total cost is divided with number of units of output. The average cost curve is also U shape. हैला average fixed cost कौन total fixed cost per unit of output. एडा TFC. Now AFC curve slopes downward from left to right in its rectangular hyperbola. हैला मु introductory part टा कहि दोची then we'll go with the chart. Average variable cost देखो average total variable cost per unit of output when the total variable cost is divided with number of units of output. हैला तो ABC curve is U shaped. A marginal cost है कौन additional cost to produce the additional unit of a thing or one more unit of a thing. The change in total cost is also known as marginal cost. Is also known as marginal cost. Clear? Marginal cost curve is also U shaped. Difference between marginal cost and average cost देखो. Average cost is the total cost per unit of output. When the total cost is divided with number of units of output AC can be obtained. But marginal cost कौन additional cost to produce the additional unit of a thing or one more unit of a thing. The change in total cost is called as marginal cost. The difference between MC and AC देखो. In the first stage they go on diminishing. The MC is less than AC. So in the first stage MC curve is below AC curve. हैला एडी कोन आमे टोटल जिंसडा को 3 स्टेजेस करबा 3 स्टेजेस करिकि तार क्लासिफिकेशन दा देखिया. But before that जेति कि हेछि सेडा में नोट डाउन करिया फर्स्ट हैला. टाइप्स ऑफ कॉस्ट रे ऐसा सब तो लिखा ही नथिला तो लाइक विल गो विथ दिस थिंग नाउ. देखो हेडिंग दियो कॉस्ट भितरे कौन कौन आछे हमरो. फर्स्ट थिंग इज what average cost जोड़ा रहेगी total cost by number of units of output. AC other formula is AC is equal to AFC plus ABC. What do you mean by this? Now average cost is equal to average variable cost plus average fixed cost. Clear? Average variable cost plus average fixed cost.
एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट से कौन कहूँ अच्छा आम ये लिखिए जेहेतु आम ये हेडिंग दे देचु एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड लास्ट वन इज कौन मार्जिनल कॉस्ट एति अच्छे हमारा मार्जिनल कॉस्ट ये लिख टोटल फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट माने टीएफसी बाय कौन नंबर ऑफ यूनिट्स टीएफसी बाय नंबर ऑफ यूनिट्स है ना टीएफसी बाय नंबर ऑफ यूनिट्स आ एडर आउटे टर्म्स देथिला कौन ना रेक्टेंगुलर हाइपरबोला average fixed cost curve slopes downward from left to right this curve is better known as what rectangular hyperbola clear ए पूरा जिनस रे एडा तमरा इंपोर्टेंट हे परियो सेतिरे मु कहिछि प्लानिंग और एनवेलप कर्व ता हे परियो हैला तापर आछि कोन हमरो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट average variable cost भितर कौन आछि total variable cost per unit of what output TVC by number of units है ना एटा सिंपली कौन कहिछि यू शेप कहिछि हैला अच्छा हमरा एएफसी कर्व भी से कौन कहिछि यू शेप वाली किछि कहनी बट स्ट्रेटली इट्स डाउन माने इट्स स्लोपिंग डाउनवर्ड आमे देखि परिया एथिरे किछि यू शेप हमको दुसुनी हैला बिकॉज़ इट्स अ फिक्स्ड कॉस्ट माने फिक्स्ड कॉस्ट जहा भी अछि सेटा किछि वेरी होबनी इंक्रीज डिक्रीज किछि होबनी जोड़ा जीवो गोटे फ्लो रे जाउथिबो दैट्स व्हाई इट्स स्लोपिंग डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड इट्स नोन एज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बट हमर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कौन कहिछि यू शेप कहिछि हैला इट्स U shaped. माने ABC curve is generally U shaped. Clear? Then as the marginal cost देखो marginal cost curve is also U shaped. Marginal cost और variable cost और basic किछि हमरो variation हमें देखिबोनु माने generally the curve shapes are almost same. अच्छा marginal cost ର meaning कौन the additional or extra cost of producing one extra unit of the total output है ना this is our marginal cost and the marginal cost curve is generally
what? U shaped. Clear? बुझिपाल? सेम जिनस मुझे लिखिली बट कौन आम टे बाइफर्केशन बुझीपार दैट्स व्हाई कौन आम सब जिनस क्लासीफाई करिकी लिखी है नाउ देखो marginal cost and average cost difference. है एडी कौन होची? Now in the above diagram the first stage both MC and AC go on diminishing. The MC is less than AC, so in the first stage MC curve is below and AC curve is above. In the second stage कौन होची? When MC and AC go on increasing the MC is more than AC. So in this stage MC curve is above and AC curve is below. Changes in the marginal cost are more than the changes in average cost. So marginal cost curve cuts the average cost curve when the average cost is minimum. So this is the point of abnormal profit. तो आमे कौन करिया? क्लासिफाई करिया आपको स्टेजेस बिहेवियर कंपैरिजन कर्व प्लेसमेंट है स्टेज 1 रे कौन होची? MC and AC go on decreasing. MC and AC go on decreasing. MC is less than AC. MC is less than C. MC curve is below and AC curve is above. माने तमे बुझिया पे एमती लिखि दबो. This is MC AC curve और एटा होची MC curve. मन रही जे तुमको. अच्छा फर्स्ट स्टेज आउ दिन रो फर्स्ट को हमें कौन करिया? AM कया ना PM कया? AM कया. तो देखो एटा AM आछी. जेतु एटा फर्स्ट स्टेज AM आछी. क्लियर? तो AC कर्व विल बी अबव MC कर्व. आ जोडा ऊपर रहबो तार वैल्यू अधिक रहयो. तो एटा भी हमर हेला. बुझिला ना? तीनटा पॉइंट तमे गुड थर रे हिंदी मन रखि पारियो. से क्वेश्चन एमती पूरा लाइक भितर आगा पचारियो. इन डिटेल जे बुझिथियो सिया करि परियो. बट जेतिकी जिंस इन डिटेल बुझियार अछि सेटा बुझिबा. जेतिकी जिंस लॉजिकली बुझियार अछि सेतिकी जिंस हम देखि. हैला? सेकंड पॉइंट देखो. सेकंड रे कौन होची? द सेकंड स्टेज व्हेन MC and AC go on increasing. MC and AC go on increasing. MC and AC go on increasing. So कौन हैला? MC is more than AC. तो ऑटोमेटिकली कौन होगा हमरो? MC curve is above and AC curve is below. MC curve is above and AC curve is below. Hello? तापर आसे बिट क्वेश्चन रो पॉइंट टा एबनॉर्मल प्रॉफिट रो है ना. एबनॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू केबे जानछ ना? when AC is minimum or MC curve
MC curve cuts AC curve from below. MC curve cuts AC curve from below. डायग्राम जेतोले डायरेक्ट क्वेश्चन ना तुमको से पॉइंट कि डायग्राम टा पर दिया है एबनॉर्मल प्रॉफिट रो केस टा केतळो मु कहि देली एवरेज कॉस्ट जेतळो सबडु मिनिमम रहिबो एवरेज कॉस्ट जेतळो सबडु मिनिमम रहिबो एंड कोन एमसी कर्व कट्स एसी कर्व फ्रॉम बिलो दीडा जे सर्कमस्टेंस रे हमर एबनॉर्मल प्रॉफिट टा होबो काहे कि एबनॉर्मल प्रॉफिट टा होबो रीजन मु कहूची देखो एवरेज कॉस्ट माने कोन पर यूनिट रो जहा भी कॉस्ट अछि माने टोटल कॉस्ट बाय नंबर ऑफ यूनिट्स सेटा जेतळो को कम हे जिवो माने मनर 10000 रुपीस हमर इनकर होथिला टोटल प्रोडक्शन एक्टिविटी पई 100 यूनिट्स हम प्रोडक्शन करूथिलु तो गोटे यूनिट रो कॉस्ट पड़थिला हमको 100 रुपीस बट कौन हैला जे तो इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी किंबा आउ किछि भी रीजन लागि कौन हैला 10000 20000 हे गला केतरा यूनिट थिला हमरो कॉस्ट थिला 10000 यूनिट्स केतरा कहली 100 तो एडा 10000 to 10000 अछि बट एडा 500 हेला 500 हेले कौन हैला 20 रुपीस पड़ा तो एवरेज कॉस्ट सबुड मिनिमम हैला ना नहीं एडा होछि हमर एवरेज कॉस्ट बहुत ड्रास्टिकली डिक्रीज हैला तो जेतु एवरेज कॉस्ट ड्रास्टिकली डिक्रीज हैला आमे कोन मार्केट रे जाय कहया कि हमर कॉस्ट डिक्रीज हेछि एली कहग्री कहया नहीं आमे सेम सेलिंग प्राइस रे बिकिबा तो सेलिंग प्राइस जदी नॉर्मली 50 रुपीस होथिला हैला जनरली कोन होथिला आमे 10000 बाय 100 हैला को केते पड़थिला हम कॉस्ट सेलिंग प्राइस रे बेसी कम हैला छाड़ 150 भाबो केते पड़छि 100 रुपीस पड़छि हमर कोन कॉस्ट एवरेज कॉस्ट तो 150 रे हम बिकुथिलु तो इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी लागि हम कॉस्ट का 20 रुपीस हैला तो एबनॉर्मली हाई प्रॉफिट हैला ना नाही एडी बुझि पाला ना नाही काई कि हैला जेतु हमर एवरेज कॉस्ट सबुड मिनिमम को पड़ा आसे क्लियर आ एडा होचे हमर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन व्हेन देयर इज एन एबनॉर्मल प्रॉफिट क्लियर एते डीपली बुझिया जणा माने दरकार एक्चुअली नाही तो हमर स्टेटमेंट होची एडा जोडर की क्वेश्चन आसीबो बट जेतोर को एग्जांपल सहित बुझिबो सेडा मन रहइबो क्लियर तापर देखो टोटल कॉस्ट व्हेन द फिक्स्ड कॉस्ट्स आर एडेड विथ वेरिएबल कॉस्ट एंड द टोटल कॉस्ट इज ऑब्टेन्ड ऑब्वियसली टोटल कॉस्ट रो फार्मूला कोन टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट व्हेन द आउटपुट इंक्रीजेस टोटल कॉस्ट आल्सो इंक्रीजेस एंड व्हेन द आउटपुट डिक्रीजेस टोटल कॉस्ट आल्सो डिक्रीजेस the total cost curve will slope upward from left to right as there is a direct relationship between output and total cost so output is directly proportional to what total cost खाली एति के लिखि दियो पूरा स्टेटमेंट रो आउटपुट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टोटल कॉस्ट सो टोटल कॉस्ट कर्व will slope upward from what left to right बुझि पाला will slope upward from left to right this is our total cost curve बुझि पालो क्लियर शॉर्ट रन कॉस्ट हम ऑलरेडी पढ़थिलु फिक्स्ड कॉस्ट कोन वेरिएबल कॉस्ट कोन हैला फिक्स्ड कॉस्ट लागे द कॉस्ट व्हिच डू नॉट चेंज बिल्कुल भी चेंज होबोनी आउटपुट को धरि की सेजा होचे हमर फिक्स्ड कॉस्ट इट मींस आउटपुट में बी इंक्रीज और डिक्रीज विदाउट इवन चेंज इन कॉस्ट irrespective of the level of output quantity the producer must incur this cost even if the output is zero the fixed cost is positive खाली a line रा अंडरलाइन करो एटा इंपोर्टेंट मार्क करो जोटा कि तुमे नोट करियो even if the output is zero output ता तमरो जीरो भी हो हैला ए फिक्स्ड कॉस्ट ता पॉजिटिव रहियो माने एंति नै कि एडा काटी जीवो पूरा आली कइरे माने कोन एग्जांपल होचे कोन हमरो रेंट हैला त प्रोडक्शन एक्टिविटी कैरी आउट करो न करो रेंट ता पेमेंट करिया पे बाध्य the fixed cost curve will be parallel to OX axis the fixed cost curve will be parallel to OX axis एडी एग्जांपल जा देछि हमरो देखो expenditure on land building salaries of permanent employees interest payment insurance premium etc तो तमरो एग्जांपल भितर जोडा भी से पचारी कि फिक्स्ड की वेरिएबल पचारी पारिबो हैला देन आसे हमरो वेरिएबल कॉस्ट which is changed with the change in output quantity
changed with the change in output quantity. It means when the output is increased, these costs are increased, and when the output is decreased, these costs are also decreased. When the output is zero, these costs are also zero. Hala, costs are also zero. Money variable costs are directly proportional to what? Output quantity. जेमिति टाइप ऑफ क्वेश्चन भी पछरे तमे आंसर करिया पे रेडी हेबार अछि हैला आ गुडे क्वेश्चन भी तमरे रेडी पारो टोटल कॉस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आउटपुट क्वांटिटी बिकॉज ऑफ व्हाट का लागि हेथिबो एडा टोटल कॉस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आउटपुट क्वांटिटी माने कोन टोटल कॉस्ट आउटपुट इंक्रीज हेले टोटल कॉस्ट इंक्रीज होबो आउटपुट डिक्रीज हेले टोटल कॉस्ट डिक्रीज होबो का लागि होची एडा वेरिएबल कॉस्ट ना फिक्स्ड कॉस्ट वेरी गुड वेरिएबल कॉस्ट लागि होची काहेकि वेरिएबल कॉस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट आउटपुट क्वांटिटी फिक्स्ड कॉस्ट तो जोडा हेले भी सेडा इनकर होबो सेडा कोन कांस्टेंट रहइबो बट टोटल कॉस्ट का लागि चेंज होची वेरिएबल कॉस्ट लागि चेंज होची तो अल्टीमेटली कोन टोटल कॉस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आउटपुट क्वांटिटी ओनली बिकॉज ऑफ व्हाट वेरिएबल कॉस्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट एडा भी गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन हे पारे माने डायरेक्ट क्वेश्चन एडा आराम से किए ले भी आंसर करि पारे बट से टाइम रे स्ट्राइक हेबार अछि तो कोन आमे आगुडो ए जिंसरा रिवाइज करिकि लिखि देथिबा क्लियर total variable cost curve will slope the upward from left to right and start from the origin upward from left to right so this is your total variable cost curve आ तुम देखथिलो total fixed cost total cost curve and total variable cost curve same रहइबो देखुचो एडा भी गुटे रीजन माने तुमको डायरेक्टली से देखौची कोन जेतु वेरिएबल कॉस्ट लागि अगर टोटल कॉस्ट इंक्रीज होची दैट्स व्हाई दीडा जार कर्व शेप भी गुटे अछि हैला ए पॉइंट भी लिखि दियो जेते भितर क्वेश्चन आसु तमे आंसर करि पारे अछि since total cost is fully dependent on total variable cost that's why there is a complete similarity between total cost curve and total variable cost curve है ना total variable cost curve ओके ए दिडा होची तमरो टेक्स्ट बुक रे नाही बट ए पॉइंट भी क्वेश्चन आसी पारे जदी इन केस ही इज लाइक विलिंग टू आस्क फ्रॉम इनसाइड द टेक्स्ट बुक माने टेक्स्ट बुक रे से पचारछ बट स्टिल यू कांट आंसर बिकॉज़ कांसेप्ट जा क्लियर नथिबो बट एबे जदी वंस कांसेप्ट क्लियर हे जेछि तो ए जिंस जा आराम से आंसर करि परियो काहे कि सब जिंस जगह इंटरलिंक हे गे अछि फाइन देखो fixed costs do not vary with the quantity of output variable costs vary with the quantity of output they are related with fixed factors they are related with variable factors hala they do not become zero they can become zero production stop hele eja zero hobani still eta kon production stop hele zero hobo production may not recover the fixed cost but production should at least recover the variable cost eta very very important lekho good thare question astila tomar kono ना प्रोडक्शन एक्टिविटी जहाँ भी अच्छी आमे काली पढ़थिलो कोन प्रोडक्शन एक्टिविटी मिनिमम कैरी आउट करिया पे जहाँ किछि भी हमरो माने थिबो फिक्स हे कि थिबो प्री फिक्स्ड अमाउंट दैट इज नोन एज अ व्हाट नॉर्मल प्रॉफिट बट नॉर्मल प्रॉफिट जहाँ भी अच्छी सेना एटलीस्ट वेरिएबल कॉस्ट रिकवर करि परिया अछि हैला प्लीज राइट ऑन नॉर्मल प्रॉफिट रो मीनिंग कोन कहितली काली इट्स द अमाउंट ऑफ मनी दैट इज रिक्वायर्ड टू कीप द प्रोडक्शन एक्टिविटी कैरीड आउट हैला प्रोड्यूसर को एनकरेज किबा मोटिवेट करिकि रखिया पई जहां किछ भी अमाउंट और रिक्वायरमेंट अछि दैट इज अ नॉर्मल प्रॉफिट बट नॉर्मल प्रॉफिट जोड़ा भी अछि सेडा कोन केतिकी अमाउंट रिकवर करियर अछि माने जहां भी एक्सपेंडिचर से करूची सबजा जदी रिकवर हि होची तो से प्रॉफिट करि परिबो बट नॉर्मल प्रॉफिट कोन रिकवर करियर अछि एटलीस्ट हमरो वेरिएबल कॉस्ट रिकवर करि परियर अछि फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर करि पारो न करि पारो बट वेरिएबल कॉस्ट कोन रिकवर करि परियर अछि काहे कि वेरिएबल कॉस्ट होची सब माने सब बळे जेति कि जे प्रोडक्शन एक्टिविटी कैरी आउट होथियो सेते जे सेडा होथियो
फिक्स्ड कॉस्ट कोन जते जाई तोर अधिक माने बहुत अधिक प्रॉफिट हबो सेबे आगे फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर हे पारे तो क्वेश्चन तमर आसी परियो नॉर्मल प्रॉफिट should at least recover normal profit should at least recover what variable cost normal profit should at least recover what variable cost है ना variable cost recover करि परियार अछि clear then देखो the cost function explains the functional relationship between cost of production and physical quantity of output cost of production and physical quantity of output कौन बुझेबो ना functional relationship between cost of production and physical quantity of output माने कौन टोटली से प्रोडक्शन एक्टिविटी पे केते के कॉस्ट इनकर हेची बट एंड सेटा फिजिकल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट माने केते क्वांटिटी ऑफ आउटपुट को केते कॉस्ट हमरा इनकर हेची से दिरा जिंस बुझेबो हैला नाउ इकोनॉमिक्स एंड डिसइकोनॉमिक्स रो इंट्रोडक्टरी पार्ट टा एडी देखिबा एंड तर इन डिटेल एक्सप्लेनेशन दा नेक्स्ट क्लास रे देखिबा फाइन खाली एबे बुझ इकोनॉमिक्स एंड डिसइकोनॉमिक्स रो मीनिंग को इकोनॉमिक्स रो मीनिंग होची इकोनॉमिक्स स्केल आर द रिडक्शन इन द पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन as the volume of production increases माने volume of production increase हेगी जाउथिबो it will result in what resulting into per unit cost of production ला कोन होबो जे डिक्रीज हम per unit cost of production ना डिक्रीज हम वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ना जेते इंक्रीज हेगी जाउथियो per unit cost of production ना सेते डिक्रीज हेगी जाउथियो क्लियर केमिति हबो मु अबे जो एग्जांपल देइथिली 10000 रुपीस होची हमर कॉस्ट हला दिस वाज अ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन COP हला यूनिट्स केतरा थिला हमर 100 यूनिट्स थिला तो पर यूनिट कॉस्ट केते पड़ला हमर 10000 by 100 is 100 rupees पड़ला क्लियर बट वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन माने एडा हमर वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन डायडा एडा जदी मनोरा 500 यूनिट्स हेयला 500 यूनिट्स हेयला तो केते हिची हमर कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट 20 तो पर यूनिट कॉस्ट केते हला हमर 20 तो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन डा इंक्रीज हैला आलगु पर यूनिट कॉस्ट कौन हैला डिक्रीज हैला ना नहीं 100 रो 20 हे गला डिक्रीज हैला ना नहीं वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन दा इंक्रीज हैला आलगु पर यूनिट कॉस्ट डिक्रीज हैला ना नहीं सो एडा होची हमर कोन इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल हेले ए जहां भी अछि लार्जर क्वांटिटी रे कैरी आउट करला आलगु केति की एडवांटेजेस थिबो से एडवांटेजेस को हमें कहया कोन इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल से एडवांटेजेस होची हमर इंटरनल एंड एक्सटर्नल टू टाइप्स थाउच सेटा कोन हमें देखिबो बट डिसइकोनॉमिक्स रो मीनिंग कोन डिसइकोनॉमिक्स रो मीनिंग होची डिसएडवांटेजेस बुझिला एडी इंटरनल एंड एक्सटर्नल दीटा जिंस को होची सिए हैला इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स एंड डिसइकोनॉमिक्स एडी लिखि दियो माने जनरली मु कहूची माने वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन दा इंक्रीज हेबा लागि जहां किछि भी हमर एडवांटेजेस हबो से सब होची हमर इकोनॉमिक्स एंड जहां किछि भी डिसएडवांटेजेस हबो से सब होची कोन हमर डिसइकोनॉमिक्स क्लियर डिसइकोनॉमिक्स तो ए दीटा जिंस हम नेक्स्ट क्लास रे डिस्कस करिया क्लियर थैंक यू